Okay, what the pictures are being flashed on your screens are of massive celebrations that have erupted across the country because the build-up for this game was very tense. The eventual result may not really match up to the build-up or the hype that was around, but at the moment, the way the Indian team has won, and because it's a victory against arch rivals Pakistan, it is always very special. I'm joined by some of our correspondents that are spread across the country with loads of fans. We'd love to hear the fan reactions because you've heard from the experts. You heard from Mr. Sunil Gavaskar. You heard from Harbhajan Singh. Fresh reactions. As soon as the game is done, we got them to you live from Colombo. In fact, I'm coming to you live from Colombo. Behind me is the Premadasa Stadium where the presentation is still on. This is the venue where India have beaten Pakistan yet again. Just a reminder, Harbhajan reminded everyone, just a reminder, the scoreline now reads in T20 World Cups 8-1 in favour of the Indian team. Okay, we'll go across to Anmol Bali who joins us live. Anmol, just describe to us the scenes that you see around you, and we'd love to hear from fans as well. What do they have to say about India's performance? Nikhil, currently I am here in the Connaught Place, heart of the national capital. As you know, as India won over the Pakistan, people were joyous, they were dancing and Indian flags were out. I'm joined by two cricket enthusiasts to know their feeling, how they felt, because Premadasa Stadium in Colombo became witness of India's victory, because we have seen politics over it, no handshake and no handshake politics. Even Pakistan was saying that they are not going to play, but then they have played this match. So I'm joined by two fans. तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आज का मैच? लोग कह रहे थे नेल बाइटिंग होगा, पर बड़ा आसानी से मारे जीत गया। नेल बाइटिंग होना चाहिए था गिवन द कंडीशंस, और एडवांटेज थी पाकिस्तान को कि उन्हें पता है सारे मैच वो कोलंबो में ही खेलेंगे, बट जैसे वो खेले अटरली डिस्गस्टिंग। इंडिया हैव ह्यूमिलेटेड देम अगेन डिस्पाइट ऑल द बॉयकॉट कॉल्स, ऑल द कि हम इंडिया को बॉयकॉट करेंगे, वर्ल्ड कप में ही नहीं आएंगे, ऑल द ड्रामा, just good for nothing. Like India rolled them over, shellacking. ऐसा मूवमेंट तो नहीं आपको लगा कि कहीं ना कहीं जहाँ कुछ मिस था या कुछ ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि पाकिस्तान मैच ले जाएगा? बिल्कुल, आई थिंक हार्दिक पांड्या ने गलती करी थी। गोल्डन टक हुए, बॉल टर्न हो रहा था, रुक के आ रहा था, लेकिन वो वैक करने चले गए पहली बॉल पे, तो वहाँ पाकिस्तान को एडवांटेज था कि दे कुड हैव कम बैक इन द गेम, बट दे डिडंट। सूर्य ने नाइस फिनिश किया, लेकिन कूडोस टू ईशान किशन, सिंगल हैंडेडली। हम यही बात कर रहे थे, हम मैच देख रहे थे कि जो ये मैच में पावर प्ले जीतेगा वही एडवांटेज है, 90% चांसेस होने के जीतने के, बिकॉज इस पिच पे जो बॉल टर्न हो रहा है बैटर्स के लिए इजी नहीं है, और जैसे पाकिस्तान ने बैटर्स ने दिखाया बहुत ही मुश्किल है, और जो स्किल लेवल पे डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तान और नोवेयर नियर इंडिया। ये मैच शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सीज में बहुत रहा, चाहे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और वेदर को लेकर भी बोला जा रहा, सवाल ये निशान खड़े किए जा रहे थे, एंड इवन पीपल वर क्वेश्चनिंग अबाउट द पिच ऑफ द स्टेडियम। सो व्हाट यू हैव टू से? सो सी व्हेन इट वाज लाइक पिच में बहुत टर्न है, पिच बहुत स्लो है, पाकिस्तान के पास 5 स्पिन बॉलर्स हैं, हमारा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, बट ऑब्वियसली मैनेजमेंट टुक द राइट कॉल, इंक्लूडेड कुलदीप एंड ऑल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बैटिंग, इंडियाज बैटिंग प्रिसाइसली। यहाँ पर हमने आज पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप्स में अपना हाईएस्ट टोटल बनाया, तो आई गेस इंडिया को डजेंट मैटर कि कहाँ कंडीशंस में खेल रहे हैं, इज जस्ट ऑल इन द माइंडसेट, एंड ये फालतू का आउटसाइड नॉइस होता है, एंड इंडिया इज वे अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट वाज रियली शोन इनटू दिस गेम एज वेल। एंड पाकिस्तान, like, they are always into this chaos and noise, and when it comes to India, we are like very luckily we are just focusing on our games, and our boys totally showed that today, and especially Ishan. If it was not for his innings, I don't think so here we would be standing and talking to you right now about how India performed today. And again, like my friend mentioned कि पावर प्ले ही गेम, मतलब T20 गेम में अगर आप पावर प्ले जीत रहे हो तो आप 95% गेम जीतने वाले हो। All right, Anmol, thank you very much for that update. Lovely to hear from those fans from Delhi, talking in such fine details about the contest. This tells you how, clued in they are. But we were in Delhi. I'm going to take you further north, and then even further north, but in the order. So let's take you to Mohali first. Asim Basi joins us from there. Asim, I know there were many fans with you. Now some of them may have dispersed because the celebrations will carry on. But whoever you've got with you, we'd love to know their thoughts as well of how, again, you had a few players from Punjab as well. Abhishek didn't have a great day. Arshdeep sat out, but yet India has beaten Pakistan. Must be celebrations all around.
Yes, definitely. We are in Sector 22 in Chandigarh. It was a busy market. We had a gigantic screen over here. And as India defeated Pakistan in the World Cup epic encounter, it was totally a one-sided affair. Yes, a lot of representation from Punjab as well. But today, Ishan Kishan was the star of the day. We have cricket fans with us holding the tricolour. And you can see people who have been celebrating and standing for India since long. आज इंडिया ने हराया पाकिस्तान को दोबारा. किस तरह देखते हैं आप? बहुत बढ़िया. और मतलब जैसे मैं नॉर्मली उतना क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ, बट इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है एक ऐसा मैच है जो सबको एक जोड़ देता है. यहाँ पर भी जैसे मैच हो रहा था, सब लोग बैठकर देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक कुछ फेस्टिवल चल रहा है, कुछ वैसा चल रहा है. तो इंडिया पाकिस्तान मैच इज ऑलवेज दैट काइंड ऑफ फेस्टिवल. एंड एक बड़ा इसके लिए बड़ा हाइप था कि बहुत ग्रेटेस्ट राइवलरी है, लेकिन जिस तरह का मैच हुआ है तो वन साइड अफेयर हो गया. हाँ, मैंने भी यही नोट किया. जिस तरह का इंडिया ने जब बॉलिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ओवर में विकेट आ गई, सेकंड ओवर में विकेट आ गई, थर्ड ओवर में भी विकेट आ गई, तो ऐसा लग रहा था शायद हम 10 ओवर में ही खत्म कर देंगे, लेकिन करते करते 17 ओवर तक गया. वैसे मैं चाहता था कि आखिरी में मैच फंसे थोड़ा सा. भी लोग हैं. सो इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक कहते हैं नेल बाइटर रहेगा, लेकिन वन साइडेड रहा. हीरो कौन रहा आज? हीरो तो डेफिनेटली ईशान किशन. उसने पहले 5 ओवर में मैच खत्म कर दिया वहां से. पिछले 4-5 साल में हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर गई है. पाकिस्तान जो बोल के सोच के आया था मैदान पे लगा नहीं, और आई थिंक पाकिस्तान ने खुद अपना मैच वहां से गवाया. आपको पहले ओवर में विकेट मिल रही है, आपने आगे पेस खड़ी कर दी, और आई थिंक वो शॉट था ना, उसने पूरा मैच ही चेंज कर दिया. For bringing us those updates from Mohali, we heard from the fans in Mohali, all happy with the performance of Ishan Kishan, but we promised you we'll keep taking you further north. Now we'll take you to Jammu. Sunilji Bhatt joins us from there, and I believe, Sunilji, right now it is party atmosphere there in Jammu. You've got loads of fans with you, all very excited, so it's over to you. Nikhil, massive celebrations are taking place here in Jammu city. Behind me you can see that hundreds of youngsters have congregated here at the Kachi Chowni Chowk. It's one of the busiest squares here in Jammu city, and you can see that they are dancing, they are celebrating this occasion. India has defeated Pakistan in World Cup, and India has crushed Pakistan. It's a massive victory, and see the celebrations that are taking place here in Jammu city right now. Youngsters are holding tricolour in their hands, and they are celebrating this occasion. You can see that youngsters are also lifting each other, and they are celebrating this occasion. So massive celebrations are taking place here in Jammu city. People are dancing to the tunes of drum beats. You can see the level of excitement and enthusiasm among the cricket fans here. The moment the last wicket of Pakistan fell, the youth came out of their homes and they erupted in joy. And look at the celebrations that are taking place here right now. They are chanting Bharat Mata Ki Jai slogans, and they are also dancing to the tunes of drum beats. So you can see the level of excitement and enthusiasm among the cricket fans here in Jammu city. Look at the celebrations. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जहां दिन में आज महाशिवरात्रि का पर्व, भोले भक्तों ने आज भोले बाबा की बारात निकाली है. वहीं हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटरों की बारात हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने निकाली है. और दूसरी ओर पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि उनके टीवी टूटने शुरू हो गए हैं. भारत माता की भैया. So you can see that fans are chanting Bharat Mata Ki Jai slogans. Look at the celebrations that are taking place here. Massive celebrations are taking place here. Youths are dancing to the tunes of drum beats. They are chanting Bharat Mata Ki Jai Sunilji, slogans. thank you. Lovely, lovely pictures that he's shown with us, that he shared with us from Jammu. And I love that, fan there talking about TVs being broken in Pakistan, but I don't think it happens anymore. Because it used to happen at a stage where they used to be expecting to win versus India. I think that stage is long gone. Even before the game starts, the staunchest of Pakistani supporter also knows, heart of heart, that it's going to be a no contest. It will be no less than a miracle if they were to beat India in a game of cricket. That hasn't happened for a very, very long time. Celebrations continue across the country, but celebrations will continue on India today as well. Lots more coming up. We are talking about India-Pakistan encounters. We'll once again hear from our cricket analyst in Sunil Gavaskar, Harbhajan Singh. We've got the highlights as well as reactions coming in from the fans. All that is coming your way on the other side of this short break. See you very soon.